Welcome student in first session from your textbook chapter number 12 sound. This chapter is related to physics. In this chapter we study about the sound, how they produce, how they travel, okay, and what are the characteristic and what are the derivative form of that sound like that. Okay. So the sensation felt by our ears is called sound. Okay, means जो भी sensation आपकी ears को feel होती है, so that is called the sound. Sound is a form of energy. Sound क्या? It is a one form of energy. Sound is that form of energy which makes us hear. Okay, means sound, it is a one form of energy that we hear. Okay, so we hear many sound around us in our everyday life. Okay, for example, that sound of vehicle, sound of musical instrument, sound of chirping of birds, sound of talking that anybody. Next, sound travel in the form of wave. तो sound कैसे travel होता है? In the form of wave. A wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the two points. मतलब टू पॉइंट्स में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. ओके, सो ये ट्रैवल करती है. By that wave, it is a wave, is a vibratory disturbance. Okay, vibratory disturbance होती है. Okay, so that for example, if we throw a piece of stone in the steel surface of water in a pond, okay, so then expanding circle, आपको circles ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिखते हैं. So that expanding circle are called ripples और वाटर वेव. आपने जैसे एक ऐसे स्टोन फेंका तो आप देखो ऐसे गोल गोल ऐसे धीरे धीरे, मतलब जो पास वाला जो एक सर्कल है वो दूसरे उसको टच करेगा, वाइब्रेट करेगा. ओके, फिर एक वो उसको, तो इस टाइप से ट्रेवल होते जाता है. डायरेक्टली ऐसा नहीं रहता है कि पूरा एक डायरेक्टली पहले बड़ा सर्कल बन गया, ऐसा नहीं रहता है. ओके, जैसे आप इस स्टोन को थ्रो करते हो in the steel surface of that water in a pond, then expanding circles called that ripples are formed over the surface of water. When a water wave that passes over the surface of water in pond, there is no actual movement of water from the center of the sides of the pond. Only the water molecules vibrate. तो सिर्फ क्या हो रहा है, पोंड में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे, वाइब्रेट हो रहे, अप एंड डाउन about their fixed position. This is the example of that wave. Now types of wave. Waves are of two types, longitudinal wave and the transverse wave. Okay. Longitudinal wave in which particles vibrate to and fro, means to and fro, means that backward and forward इस टाइप से मूव करते हैं. So that wave is called the longitudinal wave. So longitudinal wave can be produced in all three media: solid, liquid and gases. Okay, means वो solid में भी produce होती है, liquid में भी produce होती है और gases में भी होती है. Okay, look here, this longitudinal wave means here, okay, to and fro like that. Okay, direction of vibration of particle. Arrow is showing that to and fro movement of that wave. Okay, it consists of compression and rarefaction. Look here, here is the example of that spring. This is the normal position of spring. ये spring की normal position है. Okay, now here longitudinal wave in spring. अब इसमें longitudinal wave produce होगी. So the wave which travel along is spring when it's pushed or pulled. मतलब इसमें push भी कर रहे हैं और pull भी कर रहे हैं. Okay, so at one end are longitudinal wave. So like that, in a spring a compression is that पार्ट इन विच द कॉइल्स आर क्लोजर. देखो अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है. तो जहां पे पार्टिकल्स, देखो ये जो स्प्रिंग के जहां पे बिल्कुल क्लोजर आ गए, इन ए स्प्रिंग कंप्रेशन इज दैट अ पार्ट इन विच द कॉइल्स, ये क्या है, कॉइल्स आर क्लोजर टूगेदर, ये बिल्कुल पास पास में आ गई. सो दैट देन नॉर्मल. अब ये नॉर्मल ऐसा था और यहाँ पे देखो कैसे आ गए, पास में आ गए. ओके, so the region marked as C. C is what means are compression. तो ये region क्या हो गया, compression हो गया. In spring or rarefaction is that part in which the coils are farther. Okay, look here, these are what, farther, मतलब ये थोड़ा दूर दूर है.
ओके देन नॉर्मल. अब ये नॉर्मल से ये दोनों ही कैसे दिख रहे, डिफरेंट दिख रहे. यहाँ पे बहुत पास पास में आ गया और यहाँ पे बहुत दूर है. ओके इन दैट रीजन मार्क्ड एज आर मीन्स आर इज व्हाट, रेयरफेक्शन. तो इसमें क्या, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. ओके सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दैट longitudinal wave in that spring. Clear this one? This is the normal position of spring and there is a longitudinal wave. इसमें जब आप उसको स्प्रिंग को पुल करते हो और पुश करते हो तो इस टाइप से इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं. क्लियर दिस वन? नाउ लुक हियर, दिस इज अ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ longitudinal wave. A compression is that part of longitudinal wave in which the particles of the medium are closer to one another. देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा क्लोज पार्टिकल आ जाते हैं. ओके देन दे नॉर्मली आर एंड देयर इज ए मोमेंटरी रिडक्शन इन वॉल्यूम. अब इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम का रिडक्शन हो गया ऑफ द मीडियम. ओके तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया. एंड रेयरफेक्शन is the part of a longitudinal wave in which the particles of the medium are farther apart. ओके मीन्स ये क्या होते हैं, पार्टिकल देखो अब यहाँ पे कितने दूर पार्टिकल दिख रहे. ओके देन नॉर्मल एंड देयर इज ए मोमेंट्री इंक्रीज इन द वॉल्यूम. अब इसमें मोमेंट्री इंक्रीज, इसमें रिडक्शन हो गया था मोमेंट्री का और इसमें क्या हो गया, दैट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम. इसमें रिडक्शन इन वॉल्यूम हुआ था और इसमें इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया किसमें, रेयरफेक्शन में. ओके सो दैट compression is a region of high pressure, okay, whereas the rarefaction is a region of low pressure. Clear this one? So longitudinal wave consists of compression and rarefaction traveling through a medium. जब वो medium में travel करती है longitudinal wave तो compression, rarefaction, compression and rarefaction ये दोनों ही होते हैं. Clear this one? So the wave produced in air when a guitar wire, okay, like that sitar wire, tampura wire or violin wire is plugged are longitudinal wave because they are what, sound, and sound wave are longitudinal wave. Clear? Next is transverse wave in which the particles vibrate up and down. अभी आपने longitudinal में देखा to and fro means backward and forward move करते थे. Okay, अब इसमें particles कैसे vibrate करते, up and down. So transverse wave can be produced only in solid, liquid, but not in gases. और longitudinal wave all three media में produce होती, solid, liquid and gas. But in that transverse wave only in solid and liquid, not in gas. It consists of crest and trough. The water wave और that ripples means आपने देखा था जैसे stone अपन throw करते हैं तो कैसे ripples form होते हैं round round. Okay, form on the surface of water in a pond are also a transfer wave. This is because of the fact that in water wave, the molecules of water move up and down in the vertical direction when the wave travels in the horizontal direction along the water surface. Since the water molecules vibrate up and down at same place, therefore a cork or a leaf placed on the surface of water move up and down at the same place as water wave move across the surface of the pond. When a stone is dropped in a pond of water, transverse water wave are produced on the surface of water. A transverse wave travels horizontally in a medium. The particles of the medium vibrate up and down in the vertical direction. Elevation means ये ऐसे उभार जैसा जो दिख रहा है. The elevation or hump in a transverse wave is called crest. In other words, crest is the part of the transverse wave which is above the line of zero. अब ये लाइन ऑफ जीरो, ये जो लाइन दिख रही है इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ जीरो. तो ये लाइन ऑफ जीरो के जो एबो रहती है उसे क्रस्ट कहते हैं. ओके एंड द डिप्रेशन, लुक हियर दिस वन, एंड द डिप्रेशन और होलो मतलब ये नीचे रहती है ऐसे कैसे होल जैसा, जैसे होलो टाइप मतलब जैसे यहाँ पे कैसा खाली ऐसा रहता है उसे होलो कहते हैं. ये ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड ट्रॉफ. ओके ट्रॉफ इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस. मतलब क्रस्ट ऊपर रहता है और जो ट्रॉफ रहता है वो नीचे रहता है. ओके सो वेव आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय शोइंग हाउ सम प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. So light is a transverse wave. Clear this one?
Now next topic is characteristic of a wave or characteristic of a sound wave. Sound is a longitudinal wave which consists of compression and rarefaction traveling through a medium. A sound wave can be described completely by the 5 characteristics: wavelength, amplitude, time period, frequency, and that velocity of wave. Okay. First, wavelength. The minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. Okay, and it is measured in meter. So in most simple word, it is the length of one complete wave. Means ये एक wave ऐसी complete करती है, that is called the wavelength. Second, amplitude. The maximum displacement of a particle from its mean position in either direction. SI unit of measurement of amplitude is meter. Time period. The time taken to complete one oscillation. The time required to produce one complete wave or cycle. एक one cycle complete करने के लिए जितना time लगता है, that is called the time period. The unit of measurement of time period is second. Now next one is frequency. It is the number of sound wave produced per second. Second में जितनी sound wave produce होंगी, so that is called its frequency. Okay, and the SI unit of frequency is hertz. Frequency of wave is the reciprocal of its time period. Okay, so F is equal to 1 upon T. T means what? Time period. So F is what? Frequency of the wave, and T means what? Time period of the wave. Now next one is velocity of wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave. Okay, means एक सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है वेव, सो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. ओके, ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ ए वेव. ओके, सो वी नो दैट velocity is equal to distance traveled upon time taken. Suppose a wave travels a distance lambda. Okay, this is the sign of that lambda, means inverted y, ulta y रहता है. Okay, which is the its wavelength. In time t, then v is equal to lambda upon t. Means that here t is time taken by one wave. We know that 1 upon t is equal to what? Frequency. Okay, becomes the number of wave per second, and this is known as what? Frequency of the wave. So we can write f in place of 1 upon t. Means 1 upon t के place पे आपको क्या write करना है? f. Thus v is equal to f multiplied by lambda. Okay, where v is what? Velocity of the wave, f is what? Frequency, and lambda is what? Wavelength. Okay, so the velocity or a speed of a wave in a medium is equal to the product of its frequency and wavelength. This is called the wave equation. So the wave equation has 3 quantities in it. So if we know the value of any 2 quantities, then the value of the third quantity can be calculated. Clear this one?